उनके दिमाग में आइडिया है, ठीक है, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस आइडिया को रियल दुनिया में कैसे टेस्ट करें, ठीक है। सो एजेंडा फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड क्या रहेगा ना कि कैसे भी आइडिया पे रिसर्च स्टार्ट करें, ठीक है। आइडिया के बेस पे कंटेंट प्लस फॉर्म प्लस पैम्पलेट कैसे करें, ठीक है। आइडिया तो है बट सोचो, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने के लिए स्टार्ट मत करो, ठीक है। रियल कंटेंट का बात से शुरू करो। एक पर्टिकुलर चीज जो मैं सोच रहा हूँ जो कस्टमर को सॉल्व कर रही है प्रॉब्लम, वो है कि नहीं, ठीक है। मैंने बहुत सारा 5 साल मैंने काम किया स्टार्टअप में और मुझे ये पैटर्न समझ में आया। ज़्यादातर फाउंडर्स क्या करते हैं ना, क्या गलतियाँ करते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है तो कस्टमर को भी वही प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा तो उनको ही बेचूंगा। सो ये सब पैटर्न्स मत समझो, ठीक है। ये सब आपको understanding their life, their problems, their struggles before you even think about your solution. This episode is for every single one of you who has a powerful idea but is stuck wondering, is this actually going to work? Let's figure that out together, step by step, without writing a single line of code. The journey of a founder is not about having the best idea. It is about having the most validated idea. Validation is everything. It is the process of checking, rechecking, and confirming that the problem you are trying to solve is a real painful problem for a specific group of people, and that they are willing to use and maybe even pay for a solution. Think of it like a scientist in a lab. The idea is just a hypothesis, an educated guess. मैनुअल, ठीक है, मैनुअली पहले करो, ठीक है, सो दैट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे स्टेप नंबर 1, पिक योर आइडिया, ठीक है। आइडिया को पिक कर लो, पिक योर आइडिया बट डोंट एज्यूम। मतलब एज्यूम, मुझे एज्यूम करके मत चलो मुझे प्रॉब्लम है ना, एज्यूम कर लेंगे, नहीं। इट्स वैलिड, ठीक है, वो वैलिड है, ठीक है। सबसे पहले आइडिया परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, वो रिफाइन होती है लोगों के प्रॉब्लम से, ठीक है। आजकल डायबिटीज है और दूसरा कुछ कैंसर हो सकता है, कौन सा कुछ दूसरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल मैंने दिया कि यार एक अभी ये प्रॉब्लम हो गया तो दूसरे तरीके से बोलेगा। पहले 5 आइडियल कस्टमर idea. Let's take an example. मान लीजिए, you want to build an edtech app. An app that helps college students manage their assignments, notes, and exam schedules all in one place. You call it StudyBuddy. This is your big idea. But building an app is not a research prompt. It's too big, too vague. We need to break it down into smaller testable pieces. These small pieces are called hypotheses. A hypothesis is a simple statement that you want to test. It's a guess you make about your customers and their problems. This is the most critical step in the entire research process. Let's break down our StudyBuddy app idea. What are the core assumptions we are making? Assumption 1. College students struggle to keep track of their academic tasks. Assumption 2. They are currently using multiple inefficient methods like diaries, random apps, or just their memory. Assumption 3. They would be willing to use a new dedicated app just for this purpose. Each of these assumptions needs to be converted into a clear, simple hypothesis. For example, a good hypothesis would be, college students in engineering courses find it difficult to manage deadlines for multiple subjects and often miss them. See how specific that is? We are not talking about all students, but specifically engineering students. The magic of this process is that it forces you to think deeply about your user. Who are they, really? What is their daily life like? The more specific your hypothesis, the easier it will be to find the right people to talk to, and the easier it will be to get clear answers. Instead of a vague, do you need an app to manage studies? Which will get you a simple yes or no, your specific hypothesis leads to better questions. It makes your research focused and actionable. Your goal is to have 3 or 4 core hypotheses that cover the main problem you are solving, and the solution you are proposing. Here's a simple formula to create your own research hypothesis. I believe that a specific type of person struggles with a specific problem because of a specific reason. For our StudyBuddy app, it could be, I believe that first-year university students struggle with managing their study schedules because they are overwhelmed by the transition from school to college-level academics. This single sentence is your North Star. It tells you who to talk to,
what to ask them about, and what underlying cause to explore. Now, we have a real investigation on our hands. Now that you have your hypothesis, how do you test it? You don't build the app. No, you create something much simpler, much faster. You create a simple piece of content. This could be a one-page pamphlet or poster. Yes, a simple pamphlet, either digital or physical. Think of this pamphlet not as a sales tool, but as a conversation starter. It is a prop that makes your idea tangible and real for the person you are talking to. It gives them something to see, to react to. This is your first minimum viable product, or MVP. And the best part? It takes a few hours to make, not months. What should this pamphlet contain? It needs to be simple, clear, and focused on the user's problem, not your solution's features. For our StudyBuddy app, the pamphlet could have a catchy headline like "Tired of messy notes and missed deadlines?" Imagine all your college life, organized in one app. Below the headline, you should have 3 simple bullet points. These points should describe the benefits, not the features. For example, never miss a submission again, find any note in 5 seconds, and ace your exams with smart reminders. Don't list technical features like cloud sync or AI integration. Nobody cares about that at this stage. The language should be your user's language, simple, direct, and maybe even a little bit of Hinglish. Jaisa aap unse baat karoge, waisa hi likho. The goal is to make them feel understood. At the bottom of the pamphlet, you need a very clear call to action. But this CTA is not download now. It's interested? Join our exclusive WhatsApp group for early access and help us build the perfect study app for you. This is genius. You are not asking for money. You are asking for their opinion and making them feel like co-creators. You are building a community before building a product. You can design this pamphlet for free using tools like Canva. Canva has thousands of free templates. You don't need to be a designer. Just pick a clean template, use a clear font, and maybe one relevant image. That's it. You can create a digital version, a simple JPEG or PNG image, and also print out a few physical copies. The digital version is for online sharing, and the physical copies are for when you meet people face to face. This simple document is now your key to unlocking real customer feedback. It's time to take it out into the world. Alright, so you have your pamphlet ready. You've identified your target audience, say first-year engineering students. Now comes the real moment of truth, actually talking to them. But, where do you find these folks? The answer is pretty simple. Just go where they hang out. If you're online, check out Facebook groups for university students, college-specific subreddits, or even your own extended network on WhatsApp. For offline, it's even more straightforward. Literally head to a college campus, just outside the gate, or maybe a nearby cafe or library. The goal here is to find 5 to 10 people from your target group who are willing to give you 15 minutes of their time. Be polite, be honest, and just tell them you're a student or founder doing research for a new idea. And once someone agrees to chat, remember, your job is not to pitch or sell. Your job is to actually listen. Don't start with, "Hey, what do you think of my app idea?" Trust me, that's a trap. Instead, start by asking open-ended questions about their life and their problems. You want to understand their world first, right? Good questions are the key to good insights. Try asking, "Can you walk me through how you managed your studies last semester?" Or "Tell me about the last time you missed an assignment deadline. What happened?" These how and tell me about questions encourage stories, not just yes or no answers. After you've truly listened to their story and understood their current process, then, and only then, show them the pamphlet. Say something like, "Based on what you told me, I've been thinking about a possible solution. Can I get your quick feedback on this concept?" Let them read it, and then just watch their reaction. Don't say anything. Let the silence hang for a bit. Do their eyes light up? Do they look confused? Do they lean in? Their nonverbal cues are just as important as their words. Once they've had a moment, ask them, "What are your first thoughts on this?" Or "Does this feel like something that would solve the problem you just described?" Here are some more killer questions you can ask at this stage. What is the most interesting thing on this pamphlet? What is the most confusing thing? If this app existed today, what would make you try it? And, the most important question of all, what would you not use this for? This last question is super powerful because it helps you uncover false assumptions and spot features that nobody actually wants. Just avoid questions like, "Do you like this idea?" Because honestly, everyone will politely say yes. You need brutal honesty, and these specific open-ended questions are designed to get you just that. Congratulations, Yar!
You've spoken to 10 people. Now you're sitting with a notebook full of scribbles, maybe some voice notes, and a whole lot of feedback. So now what? The final step is to analyze all this information. This is where you turn those messy conversations into clear action items. The main goal is to look for patterns. Don't get stuck on what just one person said. Focus on things you heard again and again from at least 4 or 5 different people. These recurring themes are absolute gold. They're the real signals in all that noise. Create a simple spreadsheet using Google Sheets. It's totally free, by the way. In your sheet, just make a few columns. Person demographics and current method used. Key problems mentioned. And reaction to pamphlet and key quotes. Go through your notes for each interview and fill this out. As you do, you'll start to see patterns emerge right in front of your eyes. You might even discover that while you thought deadline management was the biggest problem, 8 out of 10 students were actually more frustrated with organizing and finding their study notes. That's a massive insight. Your core hypothesis might be wrong. And that's actually a wonderful discovery. This analysis helps you do 3 things. First, it validates or breaks your assumptions. Like if most students said, I already use Google Calendar and it works fine, then your assumption that current tools are inefficient is broken. You need to rethink your idea. Second, it helps you prioritize your MVP features. If everyone got excited about the find any note in 5 seconds point, but nobody cared about the exam schedule, then you know exactly what to build first. You don't need to build everything. You just need to build the one thing that solves the most painful problem for the most people. तो फाइनल समरी क्या है? एकदम सिंपल लैंग्वेज में स्टेप 1, आइडिया को सच मत मानो, उसको एक गेस समझो. स्टेप 2, ऐप में बड़े आइडिया को छोटे छोटे रिसर्च क्वेश्चंस में तोड़ो. स्टेप 3, एक सिंपल सा पैम्फलेट बनाओ कन्वा पे, फ्री में. सोल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम पे फोकस करो. स्टेप 4, सही लोगों से, फेसबुक ग्रुप्स, कॉलेज के ये बाहर जाकर बात करो. उनकी सुनो, अपनी बात सुनाओ, सही सवाल पूछो. स्टेप 5, सारे फीडबैक को एक जगह लिखो और पैटर्न्स ढूंढो. देखो क्या चीज बार बार लोग बोल रहे हैं. This simple, zero-cost process will save you months of wasted effort and tell you exactly what to build next. In our next episode, we'll talk about how to use this research to get your first 10 beta users who are dying to use your product all through content with zero ad spend. बताना है कैसे कर सकते हो इस बिजनेस इसके रिलेटेड. सो बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूँ. ठीक है, डीएम करो कि ये वीडियो मेरे मुझे डीएम करो, सो दैट मैं आपको शेयर करूंगा कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ. ठीक है, वो सब कुछ आप डीएम करो तो आपको एक बता दूंगा कि क्या क्या चीजें करनी. ठीक है, सो आपको मैं एक बाद में इनवाइट लिंक दूंगा, सो हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, 1-on-1 डिस्कशन करते हैं ये. ठीक है, सो और चौथा स्टेप क्या होना चाहिए ना, मैंने बताया कि आपका जो भी पोस्टर का पैम्फलेट का हेडलाइन होना चाहिए. आपके बच्चे का फोन अब बनेगा लर्निंग जोन हिंदी में. ठीक है, सो ऐसा करें. अभी उसके नीचे सब टेक्स्ट क्या होगा, एक नए टेक ऐप पर काम हो रहा है जिसमें 50 रुपए महीने में बच्चों को हिंदी में स्किल ट्रेनिंग मिलेगी. देखो ये कैसा रहेगा ना, देखो कनेक्ट होना चाहिए ऑडियंस के साथ. ठीक है, आपका फीडबैक हमें बताएं, क्या आपको ऐसा ऐप चाहिए और आप क्या करोगे, एक गूगल फॉर्म कर दोगे. ठीक है, सो अभी मैं कनेक्ट करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म दूंगा, सो वही मैं अप्लाई इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ सेम चीज. ठीक है, सो आपके आइडियाज मुझे समझ में आए, सो दैट मैं नेक्स्ट कंटेंट उसके रिलेटेड लाने के लिए ट्राई करता हूँ. ठीक है, सो आपको एक अवेयरनेस मैं क्या करना वाला हूँ, ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद जो भी लोग मुझे ये गूगल फॉर्म फिल करेंगे, उसका मैं एक टॉप 20 लोगों को मैं फ्री कंसल्टेशन दूंगा, चूज करूंगा और मेरे चैनल में भी बताऊंगा कि कैसे कैसे उनको इनवाइट करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल में इनवाइट करूंगा और मैं फ्रीली इनसाइट्स देने के लिए स्टार्ट करूंगा. ठीक है, सो यही चीजें ये मोटो है. ठीक है, 15 दिन का एक चैलेंज है. ये होने के बाद मैं एक टॉप 20 पर्टिकुलर आइडियाज को सिलेक्ट करूंगा और उसके फ्री सजेशन देना स्टार्ट करूंगा. ठीक, सो यही चीजें हैं. तो फॉर्म राइट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, राइट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं हम. फॉर्म बनाते वक्त ये मत भूलिएगा, हर क्वेश्चन का पर्पस है.
पर्पस होता है, मार्केट वैलिडेट करना और फीचर प्रायोरिटाइज करना, ठीक है। सैंपल मैं बताता हूँ ये पर्टिकुलर आइडिया के हिसाब से। क्या आपके बच्चे कोई ऑनलाइन ऐप यूज करते हैं? किस लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या कन्नड़ा, हिंदी या गुजराती, वैसे वैसे काइंड ऑफ दूसरे लैंग्वेजेस में ट्राई करना स्टार्ट करो, ठीक है। आपको पता चलेगा कि कौन सी कंटेंट वो कंज्यूम करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप महीने में ज्यादा कंफर्टेबल है या ईयरली सब्सक्रिप्शन, तो आप वैसे निकाल सकते हैं। देखो 50 महीना, 50 रुपए पर मंथ भरना उनको बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दो चीज पूछना स्टार्ट करो, महीने में भरना अच्छा लगता है कि आपको साल का, एक साल का ही भर दो तो सही रहेगा, ठीक है। आप महीने के कितना स्पेंड करना चाहेंगे एजुकेशन कंटेंट के लिए? क्या आपको सेफ प्लस डिस्ट्रक्शन एप्स चाहिए? क्या आप इंटरेस्ट रखते हैं प्री टेस्ट वर्जन ट्राई करने में, ठीक है। सो रिसर्च करने के 3 तरीके, ठीक है। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दो और सेंड पैम्पलेट्स सेंड करो खुद के लोकल ग्रुप से। ऐसे समझो कि आप खुद के ग्रुप, फैमिली ग्रुप हो सकता है, उसमें सेंड कर सकते हो, ठीक है। जो भी बिजनेस है ना आप लोग वहाँ पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। और पेरेंट स्टूडेंट को टारगेट करके उनको सेंड कर सकते हो। और ऑन ग्राउंड सोसाइटी बोर्ड्स हो सकती है, these pamphlets नियर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन स्पॉट्स में लगा सकते हो। सो ये पैटर्न समझना और अजम्पशन को ब्रेक करना। सपोज 30 लोगों ने फॉर्म भरा, वो देखना है कि 80% के लोग हिंदी प्रिफर कर रहे हैं, 60% पेरेंट्स कर रहे हैं और 50 रुपए महीना पे कर सकते हैं, 30% बोल रहे हैं कि कंटेंट बोर्डिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये सब चीजें वो लोग, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हिंदी में हिंदी फर्स्ट प्लस एंगेजिंग कॉन्टेंट प्रायोरिटी बन गया, ठीक है। और अपना प्राइस पॉइंट भी लॉक कर लिया, ठीक है। सो फाइनल समरी क्या हमको मिला कि फाउंडर्स को लगता है उनका दिमाग ही सब कुछ होता है, सब कुछ है, पर मार्केट की आवाज सबसे बड़ी गुरु, ठीक है। सो मार्केट की आवाज जो होती है ना, वो सबसे बड़ी गुरु है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या था? आइडिया से, अजम्पशन से निकलो। नंबर 2, सिंपल रिसर्च कंटेंट बनाओ। नंबर 3, पैम्पलेट और फॉर्म करो, लोगों से रियल फीडबैक लो। 5, पैटर्न को पकड़ो, ठीक है। और MVP डिजाइन, ये सारी चीजें आप बिना 1 रुपए के भी कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक फाउंडर सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग से अपना फर्स्ट एंड बीटा यूजर्स फाउंड करता है विदाउट पेड एड्स, ठीक है। मेटा एड से सब कुछ नहीं होता। मेटा एड्स एडवर्टीजमेंट कम करते हो जब आप स्केल करना चाहते हो। स्केल मतलब आपके पास ऑलरेडी यूजर्स हैं, आपको उसको 100 यूजर्स से 200 यूजर्स तक लेके जाना है, या 200 से 1000 यूजर्स को लेके जाना है, तब वो करो। सो यही बोलना चाहता हूँ, स्टार्ट स्मॉल, टॉक रियल, बिल्ड लीड, मतलब छोटे से स्टार्ट करो और छोटे छोटे से ही बड़ा बनता है बिजनेस, ठीक है। सो यही मैं कहना चाहता हूँ। लेट मी नो if you want actual this kind of a content. That's it. ये इतना ही आज का वीडियो में, आज का एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करते हैं रियल इंसाइट्स दीर्घ में, ठीक है। सिर्फ इतना ही, और फॉर्म फिल करना ना भूलें, ठीक है। मैं एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आप मुझे DM कर सकते हो, ठीक है। लिंक नहीं मिला ना तो DM कर सकते हो मुझे पर्सनली, सो दैट आई कैन गिव यू द गूगल फॉर्म, सो दैट इंटरेस्टेड लोग ही फॉर्म फिल करें, ठीक है। सब लोग मुझे फॉर्म फिल की जरूर नहीं है, ठीक है। सो जो इंटरेस्टेड है DM करो मुझे, DM इंटरेस्टेड करके, तब मैं खुद भी लिंक आपको सेंड करूंगा, ठीक है। सो इतना ही इस एपिसोड में। See you then.